हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन algae। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जो हम डिस्कस किए थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ algae। वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे कि algae इज ए थैलोफाइटिक प्लांट बॉडी। एंड मैंने वहां पर आप लोगों को समझाया था थैलोफाइटा क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय थैलोफाइटिक बॉडी। जो फिर मैं आज थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो थालस है ये एक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी मास है। जो हम नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस प्लांट का हम वो एक वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट है। जो एंजियोस्पर्म्स है वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। बट algae is not well differentiated एंड वी कैन नॉट नोटिस। हम algae को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये algae का रूट है, ये algae का स्टेम है, ये algae का लीव्स है। तो algae is just like a mass like structure, just so it is called as thallophytic body structure और thallophyta। सो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसको हम थैलस ही बोलते हैं। और वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। सो इट इज नोन एज थैलोफाइटिक प्लांट बॉडी। और जो थैलस है वो बहुत टाइप के थैलस है, और algae के अंदर वो थैलस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, थैलस स्ट्रक्चर मींस जो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत वाइड रेंज में है। तो आज उस थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे सीपेट हो जाए या सीयूईटी हो जाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक या दो क्वेश्चन ये थैलस, अल्गल थैलस के ऊपर जरूर आता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। जो हमारा अल्गल प्लांट बॉडी है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जो अल्गल प्लांट बॉडी है, मैं पिछले क्लास में ही बताया था, इट इज आइदर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स व्हाट? जो प्लांट बॉडी एक ही सेल से, सिंगल सेल से कंसिस्ट होता है। दैट प्लांट बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल और सिंगल सेल, एक ही सेल से सारा फंक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर ही एक ही सेल में है। तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर algae। और algal plant body consist of many cells, more than one cells, that algae is known as multicellular algae। एक ही सेल से कंसिस्ट हुआ तो उसको यूनिसेलुलर algae बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा सेल से वो प्लांट algal बॉडी कंसिस्ट है, उसको हम मल्टीसेलुलर algae बोलेंगे। तो ये जो हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज यूनिसेलुलर unicellular and another type is the multicellular. Thallus means what? The plant body structure. So it is either may be unicellular or it may be multicellular. आज इसी क्लास में हम सिर्फ यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका जो सेकेंड पार्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसी वीडियो में मैं आप लोगों को मल्टीसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो जो यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में वही बताया था। algae कैन बी आइदर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स मूवमेंट। मूवमेंट को लेकर algae को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मोटाइल algae, जो algae मूवमेंट करता है, और एक होता है नॉन मोटाइल algae। So its thallus organization, unicellular thallus organization, again divided into two types, that is motile, unicellular motile, and another type is unicellular non-motile.
यू शुड नोट ऑल दीज थिंग्स। मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो जो हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन है algae का, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल मिस्टेक हुआ, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन algae। तो यूनिसेलुलर मोटाइल एंड यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, दो तरीके से डिवाइड हुआ है यूनिसेलुलर algae। एंड जो मोटाइल स्ट्रक्चर है, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, that is rhizopodial, rhizopodial unicellular motile algae, and another type is flagellated, flagellated motile unicellular algae। तो ये जो यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम दो भाग से डिवाइड किए। एक तो है यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी और एक है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी। फिर यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी को दो तरीके से डिवाइड किए हैं, एक है राइजोपोडियल यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी और एक है फ्लैजेलेटेड मोटाइल एल्गी। पिछले क्लास में हम फ्लैजेला के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था जो फ्लैजेला है algae का, either it may be equal in length, either may be equal in length or it may be unequal in length। ये इक्वल हो सकता है, नहीं तो अनइक्वल भी हो सकता है। लेंथ के हिसाब से देखें तो इधर जितने भी फ्लाजला होंगे, फ्लाजला में भी कुछ algae में सिंगल फ्लाजला, एक ही फ्लाजला होता है, कुछ algae में दो फ्लाजला होता है, कुछ algae में चार फ्लाजला होता है। तो फ्लाजला में भी, algae में भी मोस्ट algae are biflagellated, means they have two flagella। मोस्ट algae के पास दो फ्लाजला होता है, कुछ कुछ algae के पास चार फ्लाजला होता है और कुछ algae के पास एक ही फ्लाजला होता है। तो जो फ्लाजला होता है, उनको लेंथ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, द फ्लाजला में बी इक्वल इन लेंथ, दैट फ्लाजला में बी इक्वल इन लेंथ, equal in length, or that flagella may be unequal in length, or that flagella may be unequal in length। तो जो फ्लाजेला, अगर दो फ्लाजेला होंगे, अगर वो दो लेंथ सेम ही है, तो वो दो फ्लाजेला को हम इक्वल बाइफ्लाजेलेटेड स्ट्रक्चर को है बोल सकते हैं। और अगर अनइक्वल हो सकते, वो भी अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ये है फ्लाजेला। और मैंने वहां पर भी बताया था आप लोगों को, जो फ्लाजेला है उस उस वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, क्विप्लास टाइप फ्लाजेला, क्विप्लास फ्लाजेला जो स्मूथ होता है, स्मूथ इन नेचर, जो स्मूथ इन नेचर होता है। और कुछ एक टाइप का फ्लाजेला मैंने बताया था जो टिंसल टाइप ऑफ फ्लाजेला है। टिंसल टाइप ऑफ फ्लाजेला मींस फिदरी स्ट्रक्चर, फीदर लाइक स्ट्रक्चर, फीदर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टिंसल टाइप ऑफ फ्लाजेला। ये जो फ्लाजेला होता है, दे आर आइदर इक्वल इन लेंथ, आइदर अनइक्वल इन लेंथ, और अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, द flagella may be apical in position or there may be lateral in position। ये तो फ्लाजेला के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बताया। और राइजोपोडिया क्या होता है, राइजोपोडिया जस्ट दे आर, राइजोपोडिया नथिंग बट दे जस्ट आर दी सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, सीडोपोडिया लाइक structure। Rhizopodial structure means they are just like the pseudopodia like structure। Pseudopodia, what do you mean by pseudopodia? Pseudopodia क्या होता है? These are just the cytoplasmic extensions, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। आप लोगों को मैं एक कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा अमोइबा है,
जो हमारा अमोइबा है, इसका जो मूवमेंट होता है, अमोइबा में जो मूवमेंट होता है, द मूवमेंट इज ड्यू टू सीडोपोडिया, वी नो दैट। तो अमोइबा का जो मूवमेंट होता है वो सीडोपोडिया के हेल्प से होता है। तो rhizopodia also pseudopodia like structure, and they are just the cytoplasmic extension. When cytoplasm extends towards outside, the cell wall and the plasma membrane also extends and forms a structure that is known as the pseudopodia. These are the pseudopodia. So rhizopodia also pseudopodia like structure वो जो हम we can notice rhizopodia in algae. So unicellular algae, those who are motile unicellular algae, they have two structures that help them. उनके पास दो स्ट्रक्चर होता है जो उनको हेल्प करता है मूवमेंट में, एक तो राइजोपोडिया हो गया और एक फ्लैजेला हो गया। इन दोनों स्ट्रक्चर के हेल्प से ही algae मूवमेंट करता है। And another type of unicellular algae is the thallus organization is unicellular non-motile, and they are mainly cucoid type. Cucoid type. Cucoid type means nothing, just spherical in shape. Spherical in shape. When the algae is spherical in shape and that algae is unicellular and non-motile, that we called as cucoid type of thallus organization, and it also belongs to unicellular type of thallus organization of a range of thallus. So it is clear. We will see little detail about these things, and here is the note for you that wide variety of thallus. मैंने आप लोगों को बताया कि जो algal thallus है, either it may be multicellular हो सकता है, नहीं तो यूनिसेलुलर हो सकता है। आज हम सिर्फ यूनिसेलुलर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। जो इसका सेकंड पार्ट में हम मल्टीसेलुलर, वो भी मल्टीसेलुलर also widely divided like colonial forms, like filamentous forms, like siphonaceous forms, like parenchymatous forms. In next class, we will discuss about all those forms or all those range of thallus organization. And today about unicellular range of thallus organization, I already told you, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, ये सारे का मीनिंग मैंने बता दिया आप लोगों को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइजोपोडिया? This is just a pseudopodia like structure. So rhizopodia means pseudopodia only, and flagellated. That is, there may be equal in length or unequal in length. There may be a single flagella, two flagella, or four flagella. The flagella number of flagella will vary from different species. Different algal species में the number will vary. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास, दैट क्लामाइडोमोनास स्पेसिस में दो फ्लैजेला है और वो दो फ्लैजेला इक्वल इन लेंथ, सो क्लामाइडोमोनास इज बाइफ्लैजेलेटेड इन नेचर, and that Chlamydomonas belongs to our class Chlorophyceae. But in some algal Chlorophyceae, those who are belongs to Chlorophyceae, some all different algal species है, and they also belongs to Chlorophyceae, but they have four flagella. But they have four flagella, and so they are called as tetraflagellated structure. So we'll discuss in detail that unicellular form of thallus organization in algae. This type of algal plant body consists of single cell. I already said you that unicellular form. Unicellular means only single. When a body consists of one cell, जो body एक ही सेल से कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट में उस बॉडी का होल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इन only in the range of one cell, that is unicellular. That body is unicellular. And those unicellular forms, they will vary in shape, means उनका जो आकार होता है वो भी different type का होता है, जैसे कि they may be rounded shape, they may be pure shape, they may be oblong or spherical shape. Their shape also vary, and those unicellular form I already told you are two types, that is unicellular motile forms and unicellular non-motile
forms and unicellular motile forms. And motile means they are able to do movement, they are able to move, and that movement and the movement or locomotion is due to presence of two structures. One is rhizopodial or and another is flagella. They can move due to rhizopodia or due to flagella. Either उनके पास उन algae के पास rhizopodia होगा, rhizopodia means only pseudopodia होगा, नहीं तो flagella होगा. इन दोनों structures में ही कुछ कोई एक ही होगा. तो पहले हम स्टडी करेंगे rhizopodial unicellular motile forms. These forms lack rigid cell wall. Those algae which are belongs to rhizopodial unicellular motile algae, this is important. They don't have rigid cell wall. They lack the cell wall. This is important. You should know all these things. This is important for exam. That which type of algae lacks cell wall? That rhizopodial unicellular algae, and they possess cytoplasmic projection. I already told you here that pseudopodia means nothing. This cytoplasmic प्रोजेक्शन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस में यहाँ पर आप लोगों को बताया जब साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं सीडोपोडिया बोलते हैं वही राइजोपोडिया ही सीडोपोडिया ही होता है तो जस्ट दे आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन एंड which help them in amoeboid movement. I already told you this is the amoeba and amoeboid movement commonly seen in amoeba and this type of movement also seen in some algae like rhizophysis which belongs to chrysophyceae, rhizochlorosis which belongs to xanthophyceae and chrysomoeba which also belongs to chrysophyceae. Then we'll and this is the structure. These are the structure rhizopodia, and I already told you what is meant by rhizopodia. Look, these are the just cytoplasmic extensions, and the cell membrane just extend outward, and this is called a pseudopodia or rhizopodia. Then the next unicellular flagellated motile forms. Flagellated motile forms. And the movement is due to here, the movement in this algae, ये जो algae है इन सारों में the movement is due to only flagella. Unicellular motile forms are found in major groups except Phaeophyceae, Rhodophyceae, Bacillariophyceae and Myxophyceae. जो unicellular motile algae होते हैं जितने सारे यूनिसेलुलर मोटेल algae होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग नोटिस कर सकते हैं बट वी कैन नोटिस दिस flagellated unicellular algae in groups like Phaeophyceae means brown algae in the group of Rhodophyceae means red algae in the group of Bacillariophyceae and Myxophyceae. And in some books, you can notice also in the class Cyanophyceae. Cyanophyceae, we cannot found flagellated unicellular motile forms. तो ये जितने सारे ग्रुप्स मैंने बताए फाइओफाइसी, रोडोफाइसी, बैसिलरियोफाइसी, विक्जोफाइसी, सियानोफाइसी इन सारे ग्रुप्स में flagellated unicellular motile forms of algae हमको नहीं मिलेगा. We can't notice. Most common example of unicellular motile flagellated algae is Chlamydomonas. This is important. Chlamydomonas is the most common example. And I already said you that Chlamydomonas is in how many flagella are present there? Two flagella. Two flagella are present in Chlamydomonas. So Chlamydomonas is known as biflagellated structure. Biflagellated structure. And the flagella, जो flagella Chlamydomonas में
होता है, प्रेजेंट होता है, दे आर इक्वल इन लेंथ, दे आर ऑल्सो इक्वल इन in which biflagellated plant body is surrounded by definite cell wall। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि क्लामाइडोमोनास में दो ही फ्लाजेला दिखाई देता है और वो दो इक्वल इन लेंथ होते हैं। बोथ फ्लाजेला में बी इक्वल इन क्लोरोफाइसी। जो मैंने बताया कि जो फ्लाजेला होता है आइदर इक्वल इन लेंथ और अनइक्वल लेंथ इन लेंथ। मैंने आप लोगों को बताया, पहले से ही बता दिया है ये सब। तो अगर जो इक्वल फ्लाजेला होता है वो मैक्सिमम जो algae होते हैं दे बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसी। वो सारे algae क्या होते हैं ना, क्लोरोफाइसी को बिलोंग्स करते हैं। और कोई ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द algae those who have, जिन algae के पास इक्वल फ्लाजेला होता है they are mostly belongs to chlorophyceae। and those algae, जिन algae के पास unequal फ्लाजेला होता है they are mostly belongs to xanthophyceae and dinophyceae। You should remember all these things because the thallus range of thallus organization is very important for your exam point of view। The number of flagella may be one। जो फ्लाजेला का नंबर है मैंने बताया कि डिफरेंट नंबर में पाया जाता है। कुछ algae में एक ही फ्लाजेला मिलता है, कुछ algae में दो फ्लाजेला नोटिस किया जाता है, कुछ algae में दो से भी ज्यादा चार फ्लाजेला नोटिस किया जाता है। So the number of flagella may be one in crassophyceae to four in some chlorophyceae। This point is very important from here to here। One second, mm, from here to here, star note these things are star market। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। we can notice four flagella belongs to which class? Chlorophyceae। One flagella belongs to Crassophyceae, and equal flagella mainly belongs to Chlorophyceae। Unequal flagella mainly belongs to Xanthophyceae and Dinophyceae। These are important। and मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि जो फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है मोस्ट कॉमन in Chlamydomonas, most common example is Chlamydomonas, and some other examples, कुछ other examples like Euglena, Cryptomonas, Heterochloris, Chlorogonium, these are the flagellated unicellular motile structure। Then we'll study about the unicellular non-motile form of thallus। and I already said you, मैंने आप लोगों को already बता दिया है कि एक ही टाइप का होता है कोकोइड फॉर्म। and they lack the locomotory organ। locomotory organ means they lack, क्या lack करते हैं, they lack flagella और and rhizopodia। उनके पास ना फ्लाजेला होता है ना राइजोपोडिया होता है। ड्यू टू लैक ऑफ these locomotory organs, ये जो locomotory organ means those organs who helped in locomotion। जो organ हमको locomotion में, जैसे ह्यूमन में legs locomotion में help करता है, जो organ locomotion में help करता है उसको हम क्या बोलेंगे, locomotory organ बोलेंगे। तो those unicellular non-motile forms of algae, they lack locomotory organs and one type of form cocoid। Cocoid means spherical structure, spherical body structure। I already said you that cocoid means spherical structure। The cell or plant body are commonly small, more or less spherical without flagella। They are mainly spherical in shape and they don't have flagella, and they don't exhibit any movements। They don't exhibit any movements। Some are solitary with other forms, groups, and are embedded in gelatinous material। It means कुछ जो ये जो कोकोइड फॉर्म्स में जो algae होते हैं, कुछ algae they stay means they are solitary। solitary means alone।
दे स्टे अलोन एंड कुछ जो algae होते हैं दे ग्रुप्स में रहते हैं दे मीन्स दे स्टे इन ग्रुप्स बट दे परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिविजुअली वो ग्रुप्स में रहते हैं लेकिन वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो उनका जो फंक्शन होता है दे परफॉर्म इंडिविजुअली and they are just surrounded by a gelatinous material. They are just surrounded. कुछ जो algae होते हैं वो अलोन सॉलिटरी स्टे करते हैं कुछ जो algae होते हैं ग्रुप में स्टे करते हैं बट they perform their function individually. Only they are stay in groups inside a gelatinous surrounding. And the common example of a unicellular non-motile form is uh, chlorella, and that belongs to the class Chlorophyceae. And another example is Porphyridium, Porphyridium that belongs to Rhodophyceae, means red algae. And थैंक यू आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आया तो अ, इसको लाइक कीजिए अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन algae इसके अंदर भी बहुत सारे सब सब डिवीजन है this multicellular forms I already said you into divided into different subgroups. In detail, we'll discuss about the multicellular thallus from the next class. Thank you.